Hello students, welcome to the another lecture number 3, in which we will be discussing different types of chemical reactions. If you haven't seen lecture 1 and 2, I will urge you to first watch those lecture and you will have a clear understanding. So let me give you a brief about this course. In this course, we will be studying the science of CBSE board of class 10. So without further ado, let's start this video. And if you want to take running notes, you are free to take those, because at the end of the day that will help you to clear your exam with a good marks. So let's start the video. इस वीडियो में हम लोग 5 types of reaction के बारे में बात करेंगे. We will discuss 5 types of reaction in this video. Okay. So first one is our combination reaction. अब नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या. टू एटम्स आर जस्ट गेटिंग कंबाइंड. देयर आर 2 एटम ए एंड बी, उसको जस्ट हम लोग कंबाइन करके ए बी फॉर्म कर रहे हैं. तो 2 एटम्स विच आर ए एंड बी, द ए एटम एंड द बी एटम आर गेटिंग कंबाइंड. सो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स सी देयर आर 2 फ्रेंड्स ए और आपकी एक फ्रेंड है बी. So for the sake of name, A is Akash, B is Barkha. So Akash told Barkha, hey, listen, I want to go for a movie. Barkha said, okay, I too want to go for a movie. So Akash and Barkha just combine and go together, went for a movie. Right? So this is how Akash combined with Barkha and they went for a movie. So similar thing happens in this reaction. We will take the first example. Calcium oxides will react with water and form calcium hydroxide. Okay, and in this reaction heat will be liberated. So this is also your activity 4. So what happened, this is going to be A, right? First one is A and the second one is B. Simple combination took place and AB is formed. ए और बी डायरेक्टली कंबाइन कर चुका है और कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ए और बी, उसके साथ कोई सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, खाली क्या हीट लिबरेट हुआ है. सो हीट इज लिबरेटेड एंड ए बी इज प्रोड्यूस्ड. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्ट लाइम भी बोला जाता है. वी कॉल CaO कैल्शियम ऑक्साइड एज क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी कॉल इट सॉफ्ट लाइम. Okay, so let's move on to the another example of direct combination reaction. So carbon burns in air is also an example of direct combination reaction or combination reaction. Burning of coal. So coal में क्या रहता है, constituent element is carbon. So carbon burn in presence of air. So carbon burns in air and we form what, and what is formed, carbon dioxide. So this is a reaction in which 2 constituent A and B. So this first one consider is carbon as A and the second one is B, and they both combine to form carbon dioxide, right? The second one is what, hydrogen is second reaction, second example, hydrogen is combined simply with oxygen and forming water, right? So this is an example of direct combination जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. What is the next example? Next example is glucose. Glucose breaking down and producing carbon dioxide and water, right? So these are all the example of combination reaction. Now let's move on to the next reaction, that is decomposition reaction. Decomposition means what? There is a one element which is in combined state and is break down to form 2 or more atoms can be formed. Okay, more compounds or more atom. एक जो compound था जो combined state में था वो break down कर रहा है to 2 or such compounds or element or something like that. So let's get our first example. So the first example is ferrous sulfate, FeSO4, which is in green color, which break downs to form ferric oxide and sulfur dioxide gas and SO3 gas. Okay, sulfur dioxide और sulfur trioxide gas produce हो रहा है.
So FeSO4 is in color is green, its color is green, and Fe2O3 its color is brown. So the activity says what is the color change, what is the observation. अगर कोई पूछे तो green color FeSO4 is getting converted to brown color ferrous sulfate and SO2 gas is released. मतलब क्या, SO2 जो गैस है वो रिलीज कर रहा है और SO2 गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर होता है, पंजेंट चोकिंग ओडर बनता है. तो दिस गैस इज बीइंग रिलीज्ड. सो नाउ कंसिडर द एग्जांपल दैट देयर आर टू फ्रेंड्स A and B. सो जो आकाश और बरखा व्हिच वर इन लास्ट एग्जांपल, सो दे डिसाइडेड टू वेंट ऑन अ मूवी, राइट. अब आकाश और बरखा मूवी देखने के लिए गए, पर फिर आकाश ने बोला यार मुझे तो ओपेनहाइमर देखना है, और बरखा ने कहा मुझे तो टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल देखना है. तो क्या हुआ, देयर इज अ ब्रेकअप. दे बोथ डिसाइडेड टू go for different movies, right? So what happens, AB decided to split up to form A and B. So this is a basic example of decomposition reaction. For example, calcium carbonate breakdowns in presence of heat to form calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is also called quicklime, right? And carbon dioxide gas is produced. So the decomposition that takes place through heat, in this reaction heat is being supplied. अगर heat नहीं होगा तो burn नहीं करेगा, calcium oxide breakdown नहीं होगा. So heat is being supplied. So the reaction that takes place in presence of heat, the decomposition reaction that takes place in presence of heat is also called thermal decomposition. Thermal means ही क्या, heat. So thermally जो decomposition हो रहा है उसको हम लोग thermal decomposition भी कहते हैं. A quick note, a quick fact, quicklime जो है, जो the quicklime is also used for making cements. Okay, cement बनाने के लिए quicklime is used. So let's move on to the next article. What happens when lead nitrate is broken down? Okay, so what we will get, we get lead oxide, PbO, nitrogen dioxide and oxygen. So why did PbNO3 comes from? We have learned from the other lecture. In previous lectures we know that Pb valency is +2, lead has a valency of +2 and nitrate has a valency of -1, so they got combined to form PbNO3 whole 2. Interchange of valency takes place. So what happened, lead nitrates break down to lead oxide, PbO, and nitrogen dioxide gas and oxygen gas is being evolved. Okay, now the next activity, if you read it, it tells that what happened when AgCl that is kept on a petri dish. Petri dish matlab what, it's a kind of dish which we use in the laboratory to keep some compounds or chemicals in it. Okay, so petri dish में अगर हम लोग AgCl रखेंगे और उसको sunlight में place करेंगे, तो what is the observation, what happens is, what happens when AgCl which is kept on a petri dish is put in sunlight. So what happens is AgCl is white in color. In sunlight this undergo decomposition reaction and forms what, Ag plus, and chlorine gas is evolved, right? So the chlorine gas gets evolved and Ag plus is formed, and Ag plus color is what, Ag plus color is grey. So what happened, white color AgCl gets converted to grey color Ag. That means in the presence of sunlight AgCl gets combined to white color, AgCl gets combined to grey color Ag. Now the next reaction is a subsequent reaction. What happens when AgB are placed in sunlight? So similar reaction, nothing to worry, that what happens in sunlight AgBr will also get broke down. So अगर AgCl break down करेगा sunlight में, तो AgBr भी करेगा. So in presence of sunlight AgBr will break down and form Ag. Ag will be produced and Br2 gas, bromine gas, will be liberated. This phenomena was previously used in black and white photography. पहले जब black and white photography होता था, before the mobile photography, color photography and DSLR kind of thing, when जब black and white photography का trend था, तब this mechanism is used, right? So what we have learned till now, we have learned where is a simple combination reaction in which two different elements gets combined to form one
compound, and there is a decomposition where one compound gets break down to several unit. I hope this is clear. If you have any doubt in this, just put a doubt in the comment section. Okay. So the next one will be what? Displacement reaction. Displacement मतलब क्या? किसी को displace कर देना. Okay. Displacement reaction means what? AB was in combined state and C was solo. Now after the reaction what happens is C gets combined with B and A became solo. For example, आप सोच लीजिए, अब दो दोस्त थे A और B और एक C सोलो जा रही थी. आप दोनों ने डिसाइड किया कि आप और आपके दोस्त A और B डिसाइड किया, तो you have decided that you want to go for a movie, and C was decided she want to go for a comedy show. Okay, but then after the fate was done, what happened was A, B and C कॉमेडी में चले गए और आप जो बच गए थे वो आप अकेले मूवी देखने के लिए you move on to go for a movie, right? So this is what happens in displacement reaction. आपको जो आप A थे, you are being displaced by C. So this will happen in the reaction of displacement reaction. Okay, what happened is Fe CuSO4, the CuSO4 was in a combined state, Fe was single. What happened after the reaction? Fe will displace Cu and we get FeSO4 and Cu. Similarly, the reaction takes place like Zn and CuSO4. What will happen? Zinc will replace copper and we form what? CuSO4, ZnSO4 and Cu. Similarly, for lead, Pb will replace copper and we get PbCl2 plus Cu. So I hope displacement reaction is quite clear to you. अब यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करना है आपको कि ये डिस्प्लेस क्यों कर रहा है, Fe को रिप्लेस क्यों कर रहा है. आपने ये दो दोस्त, आप और B, आपके दोस्त A और B, the two friends have decided to go for a movie. So why does this B ditched you and went for a C? So maybe he has some plans, something he must have been in mind, right? So maybe he found C much more interesting. He may not like the comedy show, but the company of C must be intriguing for him. So he decided to go out with C and just keep you at the side. So something like that happens. Why does the chloride will decide to combine with lead? This has something to do with reactivity series and we will learn that in chapter 3. Okay, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि more reactive element, the elements or the atoms who are more reactive will replace less reactive, right? अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम्स है जो कोई एटम है जिसका एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव विथ रिप्लेस समवन व्हिच इज लेस रिएक्टिव. मतलब क्या? लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर लेड इज रिप्लेसिंग कॉपर. सिमिलरली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर जिंक इज रिप्लेसिंग कॉपर. मतलब क्या? अगर सोचिए आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है लेकिन आपने जियो में स्विच कर लिया और वाइस वर्सा एनीथिंग. अगर आपने एयरटेल से जियो से स्विच किया, why do you decided to change to Jio or port to Jio? Because कुछ सर्विसेज और नेटवर्क का इशू आ रहा था आपके एयरटेल में और जियो उससे बेटर सर्विस दे रहा था, इसीलिए आपने रिप्लेस किया. सो दैट इज द थिंग विथ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव ones. Okay, now double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यू आर लेफ्ट अलोन इन दिस, बट यहाँ पे
अकेले नहीं रह जाएंगे. You won't be left alone. You will have a company. Let's see, A and B decided to go for a. This one is a movie group hour, and C and D is our comedy group, stand-up comedy group. लेकिन हुआ ये कि ए के साथ अब बी ने कहा मुझे मूवी पसंद नहीं, और डी ने कहा मुझे स्टैंड अप पसंद नहीं आ रहा, मुझे मूवी. सो सी सेड आई वांट टू गो टू स्टैंड अप, एंड डी सेड आई वांट टू गो टू मूवी. सो यू जस्ट स्वाइप द पार्टनर्स, राइट. तो पार्टनर स्वाइप हो गया. सो ए एंड बी, नाउ ए एंड डी आर गोइंग फॉर अ मूवी, and they are going for a comedy. C and D is C and B is going for a comedy. So we just swipe the partners. Okay, AB gets combined, AB and CD gets combined to AD and CB. We have some example in this one also. Na2SO4, this is A, this is B, sodium A, Na2SO4B, barium chloride BaCl2, barium is BaC, and chlorine is D. Sorry, my mistake, it will be D. And they combines to form what? C, B and A, D, right? So the double displacement takes place. B gets combined with D, and D gets combined with A. So the double displacement took place, right? Now the fifth type of reaction will be the most important type of reaction and a bit complicated one. आप याद रखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन का कुछ डेफिनेशंस है. आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप ओ से याद रख सकते हो. ओ मतलब ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कुछ भी इसमें से आइदर 1 और 2 और 3 अगर कुछ भी हो तो हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन कहते हैं. आइदर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली रिडक्शन में क्या होगा? इसका डायरेक्ट ऑपोजिट. अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम लोग रिडक्शन कहेंगे. सो व्हाट हैपन बेसिकली इन ऑक्सीडेशन? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or removal of hydrogen or removal of electron, and in reduction what is called removal of oxygen, addition of hydrogen or addition of electron. आप ये याद रखिए, अगर addition of hydrogen होगा so removal of hydrogen होगा. मतलब क्या? vice versa. If there is an addition of oxygen or there will be a removal of hydrogen, so there will be oxidation. If there is a removal of oxygen or there is a addition of hydrogen, there is a reduction. Okay, so let's move on to quick examples. Consider this one. Over there what happens is copper and oxygen is getting combined. So what happened? This is a combination reaction, but what happens is oxygen gets combined to copper. So what happened? Addition of oxygen. अगर addition of oxygen होगा तो क्या होगा? Addition of oxygen falls in oxidation. So this is an example of ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. कंसिडर दिस वन, दिस एग्जाम्पल. कॉपर ऑक्साइड वॉज देयर, हाइड्रोजन वॉज देयर, एंड कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कॉपर. सो क्या हो रहा है? CuO से Cu, मतलब यहाँ से क्या? ऑक्सीजन चला गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट टेक्स प्लेस. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? This is an example of reduction reaction, right? Because there is a removal of oxygen. अब बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. Those reactions are called redox reaction, right?
Those reactions are called what? Redox reaction. Redox का मतलब ही है reduction plus oxidation. Red from reduction and ox from oxidation. So reduction and oxidation are taking place simultaneously in a reduction reaction. So takes place this one. What happens is CuO gets converted to Cu, and then what happens is CuO gets converted to Cu. मतलब क्या, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन. So when Cu gets converted, CuO gets converted to Cu, there is this oxygen atom which is now not there attached to Cu. So what happens there is reduction, and over there hydrogen, oxygen get attached to hydrogen. So there is an oxidation takes place. मतलब हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और we are getting what? We are getting water. So this reaction is an example of oxidation, and these two part takes place simultaneously. So this is an example of what? Redox reaction. So the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is an redox reaction. So let us give us a quick summary of this class. So what happens? First one is the direct combination reaction or combination reaction. Combination reaction में क्या होता है? Combination reaction में होता है कि two individual get converted to a single ones. Okay, A and B get combined to form AB. Right? जैसे coal plus oxygen मतलब carbon plus oxygen get combines to form carbon dioxide. Okay. Secondly, decomposition reaction में क्या होता है? एक combined entity है. This combined entity get break down to two parts. This combined entity, one entity was there, AB. AB gets break down to A and B. एंड ये खाली ए बी नहीं, मतलब अगर आपके पास ऐसा भी हो कि ए, दिस इज ए बी सी डी, सो इट कैन गेट ब्रेक डाउन टू ए बी सी डी. ओके, सो खाली टू एलिमेंट या टू एटम तक कन्फाइंड नहीं है ये. दिस कैन ब्रेक डाउन टू मल्टीपल एटम. ओके, और मल्टीपल एटम ऑफ एन एलिमेंट्स और मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल कंपाउंड. मतलब कुछ अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, इट इज ब्रेकिंग डाउन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ decomposition reaction. So example is what? Calcium carbonate get combined to get break down to form calcium oxide plus CO2. और जो decomposition reaction takes place in the presence of heat, the reaction that takes place in the presence of heat, we call it as a thermal decomposition. Right? Now we have done what happened when AgCl is kept on a petri dish. White color AgCl get converted to grey color Ag plus. Okay, Ag, that's silver color of Ag. Next, displacement, in which what happens? One atom is displacing another atom, right? This C is displacing A to form Cb and A, right? What is an example? Given we study that ferric is Fe is replacing CuSO4, Cu of CuSO4, and we are getting FeSO4 plus Cu, right? हमने फिर पढ़ा था क्या, क्यों रिप्लेस करेगा? इफ वन एटम इज मोर रिएक्टिव देन इट विल रिप्लेस द अदर वन, राइट? अगर FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही रिप्लेस कर पाएगा. और ये रिएक्टिविटी सीरीज वी विल लर्न इन चैप्टर 3 ऑफ दिस ईयर. And next is double displacement reaction. What happens in double displacement reaction? Double displacement where two of the atom of a group get replaced with each other. Okay. For example, Na2SO4 plus barium chloride BaCl2 get combined to form BaSO4 plus NaCl. Now the next is oxidation and reduction. We know what happens in oxidation if it's either addition of oxygen or removal of hydrogen. Repeat after me wherever you are sitting. It will be helpful for you. Just repeat.
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कुछ भी हो तो हम लोग उसके ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वी विल कॉल इट एज रिडक्शन. ओके, एंड इफ ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously, that reaction is called redox reaction. Okay, I will just ask you to give a quick reading from your NCERT book or Lakshmi Singh, whichever you have, and solve some problems, and then we will move on to the next class tomorrow. Okay, so keep studying, keep enjoying the chemistry, and we will see soon. And if you like this initiative, please subscribe to the channel. And with this caveat, I will just end the lecture. Thank you. Bye bye. Tata. Have a good day.